Good morning, students. You are most welcome in Nissan Classes Private Limited Kota YouTube channels. Okay, myself Gehlot sir. Today we will learn biology chapter 2. Okay, in previous lecture you have learnt about the flower, floriculture, and parts of flowers. In parts of flower you have learnt about there are four parts: calyx, corolla, endoecium, and gynoecium. The endoecium and gynoecium are the most and essential reproductive parts. So today we will learn about the male reproductive units. Okay. In flowers, you have seen that is the stamens. The stamens are found in the group of endoeciums. Okay. So stamen in the individual units. So generally stamen is divided into three parts. The most important part is the anther. Second, filament and anther both are connect each other by the connective tissue. So that is the third parts. Okay. This anther is bilobed. It means it is made up of two lobes. Okay. These lobes are separate by the septum, that is the made up of connective tissue. If we cut the section of anther and observe in microscope, it look like these structures. So in this condition, each lobe has two chambers. So there are four chambers. These chambers are scientifically called microsporangia. What is the name? Microsporangia. Generally singular, it is called microsporangium. In microsporangium or pollen sac, the pollen grains are found. If we cut the section and observe in microscope, it look like this structure. So that is the TS of anther. The structure is surrounded by the various layers. The outermost layer is the epidermis, second layer is endothecium, third layer is middle layers, and the innermost is the tapetum. In these four layers or four parts, the first, second and third layers are protective in nature, and the last and fourth layer is the nutritive in nature. It means it provides the nourishment to the pollen grains. If we observe the small part of this in under large microscope, so we observe like this structure. The outermost layer is the epidermis. It is made up of only single layers. Okay. Second is the endothecium. It also made up of single layers. Next, number third is the middle layers. The middle layers is found into 1, 2 और 3 layers. It means इसमें एक लेयर भी हो सकती है आपकी, दो लेयर भी हो सकती है और तीन लेयर भी हो सकती है. And innermost layer is the tapetum, this one. So these three layers are protective in nature and that is the nutritive nature. These layers are help in dehiscence. It means जब एंथर आपका बस्ट होगा, फटेगा, तभी ये आपके पोलन ग्रेन्स उससे बाहर निकलेंगे. ओके. सो इसको भस्ट करने के लिए यानी डिहाइसेंस करने के लिए ये तीनों लेयर्स आपकी यूज होती है. इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एंडोथीसियम. एंडोथीसियम आपकी हाइग्रोस्कोपिक होती है. इट मीन्स ये इसकी जो सेल्स होती है वो एनवायरनमेंट में जो भी आपकी वाटर वेपर्स है, मॉइस्चर है, उसको एब्जॉर्व कर लेती है और एब्जॉर्व करने के बाद ये बस्ट होने में हेल्प करती है. टेपेटम जो सेल्स होती है ये डेंस साइटोप्लाज्म में होता है और इसके अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है. ये न्यूट्रिशन आपके जो पोलन ग्रेन्स है डेवलप वाले उनको किया जाता है. जस्ट इनसाइड द टेपेटम्स the microscope spore mother cells are found. These cells are divided mitotically and after that meiotically and produce the spores. So these spores are called microspore and microspore is generally called pollen grains. In pollen grains male gametes are found. Okay. So I repeat, the male reproductive unit is called stamen. Stamen has the three part: anther, filament and connective tissue. Anther is generally bilobed. In each lobe there are two chambers, so there are four chambers
These chambers are scientifically called microsporangium. माइक्रोस्पोरेंजिया में आपके पोलन ग्रेन्स फॉर्म्ड होंगे। इसको जब हम टीएस कट करके देखेंगे तो आपका इस तरह का स्ट्रक्चर्स होगा। इसमें आपकी एपिडर्मिस आउटर लेयर, एंडोथीसियम सेकंड लेयर, मिडिल लेयर आपकी थर्ड लेयर एंड टेपेटम फोर्थ लेयर है। इनके सराउंड सेंटर में आपको एक छोटा सा दिख रहा है, दैट इज द कनेक्टिव। कनेक्टिव वो पार्ट है जहां पर आपका एंथर और फिलामेंट कनेक्ट होंगे। ओके, अगर हम इसी पार्ट को माइक्रोस्कोप में हाई पावर में देखते हैं तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आउटर मोस्ट लेयर आपकी एपिडर्मिस है, ये सिंगल लेयर से बनी हुई है। इसकी सेल जनरली थिन होती है। एंडोथीसियम आपकी सेकंड लेयर है, ये भी सिंगल लेयर से बनी होगी। इसकी सेल्स जो होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो जनरली थिक होती है और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, इसलिए एटमोस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट नंबर थर्ड मिडिल लेयर से, ये मोर देन वन लेयर में फाउंड होती है। इट मीन्स ये आपकी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। लास्ट फोर्थ है आपकी टेपेटम। टेपेटम आपकी इनर मोस्ट लेयर्स है जिसमें आपके नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके जस्ट इनर साइड पर आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आपके माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करती है। माइक्रोस्पोर को हम जनरली पोलन ग्रेन्स कहते हैं और इन पोलन ग्रेन्स के अंदर आपके मेल गैमेट्स होते हैं। थैंक यू।